First verse. After all that Hezekiah had so faithfully done, Speak loud. Yes, thank you. Serious verse. देखिए प्यारे मित्र, Here we see the king of Assyria. हम यहाँ असीरिया राजा को देख रहा है। किस He राजा को? came to invade Judah. ఆయన అశ్షూరు రాజు అయిన సన్హెరీబు యోధా దేశములో చొరబడినాడట ये ప్రేమ. राजा यूदा देश, जहाँ यहूदा लोग परमेश्वर का लोग रहते हैं, उस देश पर युद्ध करने के लिए आते हैं। So this king of Assyria acting like a devil, దెయ్యములాగా వాడు ప్రవర్తిస్తూ ये ఉన్నాడు. असीरिया राजा शैतान का चिन्ह है। இந்த அசீரியா ராஜா வந்து பிசாசு போல शैतान போல और வந்து யூடாவை அட்டாக் பண்றார். He's attacking Judah. So how is attacking Judah? The same way the devil always try to attack us. వీడు ఎలాగూ యోధాని యోధా మీదకి చొరబడ్డాడో అలాగే సాతానుడు కూడా ఎప్పుడూ మన జీవితాల్లోనికి మన కుటుంబాల్లోనికి చొరబడడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ప్రేమ. देखिए जैसे ये राजा यहूदा के राज्य पर युद्ध के लिए आ गए, उसी तरह आज भी शैतान हमसे युद्ध करने के लिए आते हैं। Not only to fight with us. जस्ट நம்மளோட யுத்தம் பண்றதுக்கு போர் In காரணமா Telugu there is a right word చొరబడినాడంట ప్రేమ. और வந்து உள்ள நுழைந்தான்। Like a thief, how he enters into a house to steal. ఒక దొంగ ఒక ఇంటిలోనికి దొంగతనం చేయడానికి లాగా చొరబడతాడో అలాగే వీడు కూడా వచ్చినాడు. जैसे एक चोर, एक डाकू घर में घुसते हैं रहस्य से वहां चोरी करने के लिए, वैसे ये राजा है और திருடன் எப்படி உள்ள தெரியாமல் நுழைகிறானோ அடுத்த விதமாக இந்த ராஜா இந்த பிசாசு கூட அப்படிதான் வரான். The devil's main business. शैतान पिशाचोடைய मेन సాతాను యొక్క ముఖ్యమైన పని. ये शैतान का मुख्य काम क्या है? What is that? పని என்ன? What is his work? Anybody can దెయ్యం యొక్క పని ఏంటి? to attack us? to steal, kill, and destroy. Where it is written? Where it is written? To steal, kill and destroy. To steal, ఎక్కడ రాయబడి ఉన్నది? रेफरेंस बोलिए, बाइबल में Come कहाँ on. लिखा है बोलिए? John 10:10. Very good. Hallelujah. Serious friends, you are reading the word. I am very happy. आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जब मैं पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मुझको बहुत But some of you are no answer. लेकिन आप में थोड़ा लोग आंसर नहीं कर रहा है। కొంతమందికి ఆన్సర్ రావడం లేదు. No? It shows that you are not reading the word. इसका मतलब है आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, याद नहीं रख रहे हैं। దేవుని వాక్యమును చదవడం లేదని చూపిస్తున్నది ప్రేయర్. वचन नहीं पढ़ रहे हैं, याद नहीं रख रहे, बस मतलब படிக்கல, அது ஞாபகம் வெச்சுக்கல, அதனால சில பேர் சொல்ல முடியல। Serious friends. देखिए प्यारे, When the king of Syria came to attack Judah, యోధా దేశాన్ని అటాక్ చేయడానికి ఈ సిరియా రాజు వచ్చినప్పుడు இந்த சிரியா ராஜா இந்த யூதா देश में अटैक करने वंदपो, जब ये राजा ये यूदा देश में अटैक करने के लिए आए थे, do you know what this king of Judah did? ఈ యోధా దేశపు రాజు ఏం చేస్తున్నాడో இந்த తెలుసా? यूदा राजा அதனால எசேக்கியா राजा, ये यूदा के राजा ने क्या किया आप सब लोग जानते हैं क्या? You see here verse second word or fourth verse. चारने वाला वचन देखिए, 3 and 4. 3, 4 వచనాలు. He stopped all the springs. He stopped water flowing out from Judah. యోధా దేశం నుంచి వెళ్ళే నీటి ప్రవాహం అనంతా ఆపివేస్తున్నాడంట ప్రియులు. ये देश से जो सारा पानी निकलते हैं सबको रोक दिया, पानी को दूसरा देश में नहीं जाने दे। Then the thought came into my mind when I was reading. నా మనసులోనికి ఇది వచ్చింది, ప్రశ్న వచ్చింది. मेरे मन में ये प्रश्न आ गई है, Why did he stop springs or water flowing ಏನಿದೆ ರಾಜ out? ವಾಟರ್ Water
వెళుతున్న నీటి ప్రవాహాన్ని ఎందుకు ఆపేసినాడు? क्यों ये राजा पानी को रुक दिया? बोलिए Why did he stop? what will happen if he ఎందుకు stops? ఆపేశాడు? What will happen if he stops the water? He को doesn't रुकने want enemy to get the water. शत्रु लोग, శత్రువుకు నీరు వెళ్ళడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. क्योंकि शत्रु लोग बाहर है ना, ये पानी बाहर जाएगा तो शत्रु को क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। पानी नहीं है तो वो लोग क्या करेगा? चले जाएगा वहां से। Can we शत्रु लोगों को Can we live 1 week in Bangalore without water? पानी के బెంగళూరులో వారం రోజులు నీళ్ళు లేకపోతే బతకగలమా? पानी के बिना बेंगलुरु में हम जी सकते हैं How क्या? many can survive? कितना लोग कितना पानी मंदी के बातें बिना कर रहे मैं हैं? जी सकता हूँ? बोलिए Come on. बोलिए। हमको भी अब BBMP stopped water. बीबीएमपी Already water. हमको पानी नहीं आ रहा है, कावेरी वाटर नहीं आ And रहा है, bores are drying. बोर में भी Bore पानी नहीं हो रहा ఎండిపోతున్నాయి. है। We don't know how it will be in May. अब गर्मी April. काल में मई अप्रैल में कैसा होगा हमारा हालत का नहीं See, है। water is important for us, right? నీరు మనకి ఎంతో ముఖ్యం. देखिए पानी बहुत मुख्य है ना? बोलिए If the water is not available, enemy cannot stay there. He will die or go back. నీరు అక్కడ లేకపోతే శత్రువు సావాలన్నా వస్తాడు, అక్కడ తిరిగి పారిపోవాలన్నా दो పారిపోతాడు. कर्म होगा, शत्रु लोग को पानी नहीं मिलेगा तो वहां मर जाएगा, वहां से ये ना निकल के दौड़ के चले जाएगा। ये दो होना है। That's why अदिनाल he stopped water flowing from water flowing from Judah to out. చూడా యూదా దేశం నుంచి బయటకు వెళ్ళి నీటి ప్రవాహాన్ని అంతా ఆపేశాడు. చూడాలంటే வெளிய போற எல்லா தண்ணி நிறுத்திட்டார்। जूड़ा देश से बाहर बहाने वाला हर पानी को रुक दिया। Hallelujah. हालेलुया। So dear friends, देखिए to stop our enemy, हमारा शत्रु कौन है? बोलिए उसको रुकना है तो क्या మన करना? శత్రువైన సాతానుని మనం ఆపు చేయాలి అంటే प्रे, we should pray, okay, we should pray। what we should do? మన శత్రువైన సాతానుని ఆపు చేయాలి అంటే हम शत्रु को ऑफ करना है, स्टॉप करना है, रुकना है तो क्या करना है? we should stop all that sin flowing out of us. మన हमारा నుంచి వెళ్ళే ఆ పాప ప్రవాహాన్ని ఆపు చేస్తే సాతానుడు మన మీదకి రావడం ఆగిపోతాడు. हमसे बहने वाला बुराई जो बहा रहा है सबको रुकना है। நம்மளோட இதயத்திலிருந்து பிரவாகிக்கிற எல்லா தீமையான காரியங்களையும் நம்ம நிறுத்தணும்। Seriousness. देखिए The प्यारे, enemy needs water to survive. शत्रुவுக்கு தண்ணி வேணும் உழைக்கணும்னா शत्रु को पानी चाहिए। శత్రువుకు నీరు जीने కావాలి, ఇక్కడ బతకాలి అంటే है तो पानी the चाहिए। devil needs sin to survive. సాతానుడికి పాపము కావాలి, బతకాలి అంటే உங்களை अटैक பண்ணனா பாவம் வேணும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில। पिशाच सदा पाकर तुमको अटैक करना है तो तुम्हें बुराई होना है, पाप होना है, तभी शैतान तुमको अटैक See, कर सकते out हैं। of heart flows evil thoughts, बाइबल में लिखा है unclean thoughts, wicked thoughts, हमारा dirty thoughts. హృదయంలో నుంచే దురాశలు, అపవిత్రత, చెడు, మలినము, మురికి అంత వస్తుందట ప్రేమ. देखिए बाइबल में लिखा है इंसान के दिल से बुरा सोचना है, बुराई, व्यभिचार, पाप बहा रहा है। மனிதனுடைய இதயத்தில் பைபிள் என்ன சொல்றது? பொல்லாத எண்ணங்கள், व्यभिचाரம், பாவம், இச்சைகள் இவை பிரவாகித்துக் கொண்டிருக்கு। When evil flowing out from you, నీలో నుంచి ఆ చెడు బయటకు వస్తున్నప్పుడు पानी बोले இந்த தீமை வரும்போது पानी जैसे हमारा दिल से ये सारे बुराई devil survives, enjoys in that. దానిలో దెయ్యం సంతోషిస్తుంది, బ్రతుకుతుందట ప్రేమ. शैतान बहुत खुश होता है, बहुत आनंद से तुमको अटैक करने बहुत आसान हो जाता है। पिशाचन ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை அட்டாக் பண்றது ரொம்ப ஈஸி। You must stop that flowing, that evil that flowing out of you. నీలో నుంచి ప్రవహిస్తున్న చెడును ఆపు చేయాలి ఫస్ట్. உங்களிலிருந்து அந்த பிரவாகிக்கிற அந்த தீமையை நிறுத்தணும்। तुमसे बहाने वाला वो बुराई को रुकना है फर्स्ट। Hallelujah. हालेलुया। When you stop that evil, वो बुराई को जब तुम ఆ रुकेगा, చెడును वो ఆపేసినప్పుడు बुरा सोचना है, बुराई को the सोचना है। devil will lose the hold on you. నీ మీద దెయ్యానికి ఉన్న పవర్ పోతుంది ప్రేమ. पिशाचन उंगली में इतना तो होल्ड अब ये लूज आए जो कंट्रोल शैतान को तुझ पर है वो लूज हो जाते
follow me, Joshua, Joseph? जब सब लोग को फॉलो हो रहा है, Joel, करिश्मा भी Understand? अंडरस्टैंड। serious friends. देखिए प्यारे मित्र, So he did. He stopped the water flowing. तो फर्स्ट राजा ने क्या किया? पानी को रुक दिया। And second thing he did. What he did second? Fifth verse. I love Vachanam. समझने वाला वचन, He set to work hard to build up all the wall that was broken down and raised towers upon it. And outside it he built another wall, and he strengthened the millows in the city of David. He also made weapons and shields in abundance. మరియు రాజు ధైర్యము తెచ్చుకొని పాడైన గోడ యావత్తు కట్టించి గోపురము వరకు దానిని ఎత్తు చేయించి బయట మరి ఒక గోడను కట్టించి దావీదు పట్టణములో మిల్లు దుర్గమును బాగు చేయించి మరియు ఈటలను డాళ్లను విస్తారముగా చేయించును. హల్లెలూయా. यहाँ देखिए, ये यहाँ एक वॉल है, दीवार है ना, कैसे है ये? ब्रोकन, तोड़ गए। Serious friends. वो पूरा ये नगर के चारों ओर वो वॉल वाज ब्रोकन, அந்த wall அந்த மதில்களை திருப்பி அவர் ரிப்பேர் பண்ணி கட்டினா, उसको रिपेयर किया, अच्छा बनाया और बाहर और एक दीवार बनाया। देखिए, See, God is speaking to me. परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, कर्ता என்னோட பேசி Strengthen your walls. నీ యొక్క పురములను, నీ యొక్క సరిహద్దులను, నీ యొక్క ప్రహరీలను బలపరుచుకోమంటూ ఉన్నాడు. परमेश्वर मुझसे बोल रहे हैं, तुम्हारा दीवार को अच्छा बनो, तोड़ गए तो रिपेयर करो, तुम्हारा चारों ओर கர்த்தருடைய மதில்களை ரிப்பேர் பண்ணு, உடைஞ்சிருக்கிறத ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்ட்ராங்கா பண்ணனும். So this Ezekiel, So Ezekiel ராஜா to keep the enemy away from the country, తన దేశము నుంచి శత్రువును దూరంగా పెట్టడానికి அவருடைய కంట్రీலிருந்து దేశத்திலிருந்து శత్రు దూరமாக అனுப்புறதுக்காக first thing he stopped the water flowing out. మొదటిది నీటి ప్రవాహాన్ని ఆపివేస్తున్నాడు, బయటికి వెళ్ళకుండా. फर्स्ट क्या किया राजा? शत्रु को दूर भेजने के लिए फर्स्ट क्या किया? पानी को बंद कर दिया। बंद। सेकंड क्या किया? Second thing what he did, सेकंड क्या किया? he worked hard to repair all the broken walls. बहुत పగిలిపోయిన, విరిగిపోయిన, పడిపోయిన గోడలను బాగు చేయడం ప్రారంభించినాడు. बहुत मेहनती करके, कठिन श्रम करके, तोड़ गए हुआ ये सारा दीवार को रिपेयर करके अच्छा बना दिया। अब तो रिपेयर होके बहुत स्ट्रांग है वॉल्स। Hallelujah. हालेलुया। Serious friend, the walls. वॉल्स Now Indian government building wall across India Burma border. India Burma की మధ్యలో భారతదేశం గోడ కడుతూ ఉన్నది. देखिए, भारत देश इंडिया और बर्मा के बीच में बॉर्डर होता है ना, वहाँ एक बड़ा दीवार बन रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट வந்து ஒரு பெரிய மாதிரி வால் அவங்க பில்ட் பண்றாங்க To stop terrorists moving into India. क्यों ऐसे ఇండియాలోనికి టెర్రరిస్టులు రాకుండా అక్కడ గోడ కట్టేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు. क्यों ऐसे कर रहे हैं? शत्रु लोग, बर्मा से टेररिस्ट लोग इंडिया में नहीं आना। सुनो, लिसन हियर, इसीलिए वो ऐसा वॉल बिल्ड किया है। See, everybody will have their comfort wall, right? So देखिए, लोग कहीं से comfort wall होता है. हर घर को कंपाउंड वॉल रहते हैं, है ना? What for? To show up. क्यों वैसे कंपाउंड So to see how much money we have. మాకు ఎంత డబ్బు ఉంది చూడండి. How beautifully we built. మేము ఎంత అందంగా కట్టాము చూడండి. What for we build? ఎందుకు కడతాం మనం కాంపౌండ్ వాల్? What for? Security. For our security. Hallelujah. हम सुरक्षित रहना है। हर एक गेटेड कम्युनिटी, हर एक फ्लैट की क्या है? दीवार है ना? Serious friends. देखिए प्यारे मित्र, When the walls were broken around Jerusalem, Jerusalem చుట్టూ గోడలు పడిపోయి ఉండగా, टूटे हुआ दीवार होगा तो मदिर ఒడంజిరుండాలన్నా क्या the होगा? enemy can enter easily and attack. శత్రువు ఈజీగా వచ్చి అటాక్ చేయవచ్చు. चोर आसान से आ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, लायन आ सकते हैं, सब कुछ आ सकते हैं। Thus Ezekiel took the decision to
to build or repair all the broken walls. அவர் ரொம்ப ఇరిగిపోయిన పడిపోయిన గోడలను బాగు చేయడం కట్టడం ప్రారంభించినాడు. इमरजेंसी रीत में எல்லாமே ரிப்பேர் பண்ணிட்டாரு. बहुत इमरजेंसी जैसे सारे वॉल को रिपेयर कर दिया. To stop the enemy, శత్రువును ఆపు చేయడానికి. शत्रु को रोकने के लिए शत्रु में स्टॉप करने का था. Those days no bombs, अब पहला बॉम्ब मिला किया. no rockets. वो बॉम्ब नहीं है, Rocket रॉकेट नहीं है, bomb मिसाइल नहीं है. That's why they were able to do all that. இதெல்லாம் பண்ண But முடியாது. today one aeroplane comes up and they can put one bomb or they can send rockets from here to there. இந்த நாள்ல மாதிரி இருந்தாலும் மேல இருந்து ஏரோப்ளேன் வந்து என்ன போட முடியும்? बॉम्ब फोड़ रही है. दीवार नहीं है तो ऊपर से एरोप्लेन आके एक बॉम्ब डालेगा तो क्या होगा? So now सब कुछ नाश कर that's देगा. why devil, அதனால they பிசாசானவன் will also becoming more and more technical now. பிசாசானவன் Technology, learning technology. டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ணி அவங்க கூட எப்படி அட்டாக் பண்ணனும் கைसे अटैक It is करना we are learning technology, using technology to attack us now. सारे इंसान को कैसे अटैक करना इंसान को नाश करना वो ही है शैतान का Directly from satellite it is coming and attacking us. आप Satellite से నుంచి మనం आके attack हमको attack చేస్తాం. कर रहा है सब कुछ How? मोबाइल में आके My wife is leaking. Huh? Through From mobile, right? मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल में इतना जोर से कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हो रहा है सारा बुराई आ रहे हैं सब कुछ हम देख रहे हैं Seriously, देखिए प्यारे मित्र like Ezekiel, हम भी ऐसे किया जैसे हम लोग ऐसे किया बोले we must repair our broken walls to keep the enemy away from us. कहाँ कहाँ हमारा दीवार तोड़ा है शैतान घुस सकते हैं उन सबको हम रिपेयर करना है இதெல்லாம் நம்மளுடைய மதில் உடைஞ்சிருக்கோ பிசாசன் ஈஸியா வர முடியும் அதெல்லாம் நம்ம ரிப்பேர் பண்ணணும் మనకున్నటువంటి ఈ ప్రహరీ గోడను ఎక్కడెక్కడ కూలిపోయినాయో అవన్నీ కూడా మనం రిపేర్ చేయించాలి. శత్రువు నుంచి మనం కాపాడుకోవాలి అంటే हम शत्रु से बचने हैं तो इन सब को हम रिपेयर करना है let us turn to Matthew 5th chapter. मत्ती का सुसमाचार 5 మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం. मत्ती का सुसमाचार 5 को हम देखेंगे Let us read third verse. మూడవ వచనం. 5:3 मत्ती 5:3 Third verse. Blessed are the humble in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. देखिए उसने जो दीन होते हैं वो आशीर्वाद का लोग है क्योंकि परलोक राज्य उसका है Serious friends. देखिए प्यारे मित्र Due to money, due to job, due to education, many children of God lost humility today. చదువుని బట్టి, ఉద్యోగాన్ని బట్టి, డబ్బును బట్టి అనేక మంది దేవుని పిల్లలు దీనత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. यहाँ लिखा है धन्य है वे जो मन में दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है बहुत सारे लोग जब जीसस के पास आते हैं जीसस उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं धन देते हैं ये आशीर्वाद धन को देख के परमेश्वर को भूल जाते हैं छोड़ देते हैं Humility दीनता भी तोड़ते हैं is like a compound wall for us. దీనత్వం అనేది ఒక కాంపౌండ్ వాల్ లాగా మన జీవితానికి. compound wall जैसे है நிறைய பேர் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஏசாமிக்கு வந்து Do you follow Joshua? அந்த ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து தாழ்மையெல்லாம் இழந்துட்டு ரொம்ப பெருமைக்காரங்களா If we lose humility, நம்ம இந்த దీనత్వాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటే இந்த தாழ்மையா இருக்கிறத நம்ம இழந்துட்டா ये दीनता को हम खोएगा तो our wall is broken. మన wall breaking. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்மளுடைய மதில்கள் உடைந்திருக்கு हमारा दीवार हम वो तोड़ गए हैं See, when the humility is absent, the pride comes in. దీనత్వము లేదంటే గర్వం మనలోకి వస్తుంది. दीनता नहीं है तो हम बहुत घमंडी बन जाएगा तो दीवार तोड़ गए நம்ம தாழ்மை இழந்தா ரொம்ப பெருமைக்காரங்களா ஆயிட்டா அந்த மதில் உடைஞ்சு So God resists the proud. பைபிள்ல என்ன போட்டிருக்கு பெருமைக்காரங்களை கர்த்தர் எதிர்க்கிறார் గర్విష్ఠులను త్రోసివేస్తాడంట దేవుడు. घमंडी लोग को विरुद्ध करते हैं Serious friends. देखिए प्यारे मित्र We need to repair this. మనం దీన్ని రిపేర్ చేయవలసి ఉన్నది. இந்த மதில்களை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணணும் We need humility to protect our lives from the devil. शासन நம்ம காப்பாத்துறதுக்காக நமக்கு தாழ்மை தேவை हम शैतान से बचने के लिए हमको दीनता So चाहिए devil cannot touch a humble person. దీనుడిగా ఉన్నవాడిని దెయ్యం ముట్టుకోలేదు. जब हम दीन बन के रहते
முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. And 8th verse it says, அஞ்சாம் வசனம், क्या लिखा? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. धन्य है वो जो धन्य है जिसके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. हालेलुया. Hallelujah. The holiness, the purity is a wall for us. शुद्ध रहना, पवित्र रहना, ये भी एक बड़ा दीवार है. பரிசுத்தமாக இருக்கிறது, அதுவும் ஒரு மதில் தான் நமக்கு. If you are living a holy life, நம்ம பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை ஜீவித்தால், Rupa. हम पवित्र जीवन जिएगा तो, if you are living a holy life, पवित्र जीवन நம்ம பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால், listen, நல்லா கேளுங்கள், अच्छे तरह सुनिए. the holy life will protect us from so many dangers, evil in this world. ये பரிசுத்த இந்த பரிசுத்தம் நம்மள நிறைய தீமைகள் இருந்து காக்கும். हम पवित्र रहेगा तो बहुत बुराई से हम छिप के रह सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Joseph was living a holy life. बाइबल में యోసేపు పరిశుద్ధ జీవితం జీవిస్తూ बाइबल ఉన్నాడు. में यूसुफ बहुत पवित्र रहते थे. जोश कम The devil शैतान not able to destroy him. उसको नाश नहीं कर पाया. யோசேப்பு பைபிள்ல பரிசுத்தமாக வாழ்ந்த பிசாசானவன் He அவனை ran away from sin, uncleanness. పాపం నుంచి దూరంగా పారిపోయాడు. बुराई से, अशुद्धता से छोड़ के दूर दौड़ के Hallelujah. அசுத்தத்தையும் அவர் விட்டுட்டு ஓடி போனார். The holiness பரிசுத்தமாக இருக்கிறது, பவித்திரதானா protected him. காப்பாடினது prayer. சுரக்ஷிதமா அவரை காப்பாத்தினது. But today, ஆனால் இந்த நாளில holiness. பரிசுத்தமா இருக்கிறது அது இல்லவே இல்ல. பவித்திரதானா சுத்தரானா ये दुनिया में नहीं है. This wall is broken in many lives. ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఈ పరిశుద్ధత అనే వాల్ బ్రేక్ అయిపోయింది. நம்ம சுத்தில இருக்கிற வால்ஸ்ல ஒரு வால் வந்து பரிசுத்தமா இருக்குது, அது உடைஞ்சிருக்கு. हमारा चारों ओर रहने वाला दीवार में एक दीवार है पवित्रता, वो तो तोड़ गए. The eyes are full of unclean today. கண்களின் இச்சையால எவ்வளவோ அசிங்கமான காரியங்கள். All the dirt and flood which is flowing out of cell phone లో నుంచి వస్తున్నటువంటి మురికి కుప్ప కళ్ళను పాడు చేసేస్తా ఉంది. सेल फोन से आने वाला वो बुराई, वो बुरा कार्य आंखों में प्रवेश करके हमारा आंखों को And अशुद्ध कर रहे हैं. spoiling the mind, మనసును పాడు చేసేస్తా मन ఉంది. को खराब कर रहे हैं. Spoiling the tongue, నోటిని పాడు చేసేస్తా ఉంది. அதனால வாயிலிருந்து எல்லா அசுத்தமான வார்த்தைகள், मुंह से बुरा शब्द, Spoiling the whole body, దేహం అంతటిని పాడు जब చేసేస్తా हम ఉంది. ऐसे करते हैं पूरा शरीर अशुद्ध बन जाते हैं, पूरा शरीर में अशुद्धமாகிறது. So you need to strengthen this wall of holiness. परिशुद्धम அந்த மதிலை பலப்படுத்தணும். जो तुम्हारा ये दीवार पवित्रता का है तोड़ा है तो ఈ పరిశుద్ధత అనే గోడను నువ్వు రిపేర్ చేయవలసి ఉన్నది ప్రేయర్. रिपेयर करना है. Hallelujah. हालेलुया. And he says here, और क्या बोलते हैं? and see, let us read third, fourth verse. నాలుగవ వచనం. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. దుఃఖపడేవారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడతారు. धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएगा. So dear friends, देखिए प्यारे the मित्र, blessed are those who mourn, who weep, who repent for their sins. They will be comforted. దుఃఖపడేవారు వాళ్ళ పాపముల గురించి పశ్చాత్తాపడేవారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడతారు. जो उनके पाप के लिए रोते हैं, पछतावा करते हैं, वो परमेश्वर ने बुराई किया हूँ बोल के परमेश्वर की सन्निधि में रोते हैं, वो शांति पाएगा. யாரெல்லாம் அவங்களுடைய பாவங்களுக்காக, அவங்களுடைய கெட்ட தீமைக்காக கண்ணீரை சிந்துகிறாரோ கர்த்தருடைய சன்னிதானத்துல அவங்க சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்வார். Hallelujah. ஹalleluya. The repenting நம்ம மனம் திரும்பணும். for our sins. हम पछतावा మన పాపముల కొరకు దుఃఖపడడం, పశ్చాత్తాపడడం. செஞ்ச பாவங்களுக்காக நம்ம வந்து மனம் திரும்பி மனக்கசந்து அழுது ஜெபம் பண்ணணும். हमारा पाप बुराई के लिए परमेश्वर की सन्निधि में रो के माफी मांगना है. Hallelujah. हालेलुया. Listen, dear friends. सुनिए प्यारे मित्र, As long as you have that repenting heart, कितना
పశ్చాత్తాప హృదయం నీకు ఉన్నంత కాలం कितना दिन तुम्हारा पास पछतावा पड़ने के, सॉरी बोलने के, बुराई छोड़ने के मन होता है. உன்னுடைய இருதயத்துல தாழ்மை இருந்து நீ மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்புற நாட்கள் எல்லாம் if you are able to forgive, able to ask forgiveness, ఇతరులను క్షమించగలగడం, ఇతరులను క్షమించమని అడగడం. மத்தவங்களை மன்னித்து மன்னிப்பு கேட்கிறது இருந்தால் दूसरों को माफी करना, माफी मांगेंगे तो The devil cannot touch you. शैतान तुझको कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सै- हालेलुया. சைத்தான் முட்டுக்கொள்ளையிட ஒண்ணுமே முடியாது. செய்ய முடியாது. But today ஆனால் இந்த நாள்ல people are losing that heart. அந்த தாழ்மை மன்னிப்பு கேட்கிறது அது இழந்து போறாங்க. லோகம் ஓ தீனता माफी मांगना, सॉरी बोलना, Not willing to ask sorry. సారీ అడగడానికి కూడా ఇష్టం లేదు. सॉरी भी मांगना नहीं चाहते. सॉरी நான் தப்பு செஞ்சிட்டேன் அது சொல்ல கூட ரெடி இல்ல. Listen dear friends. பாருங்க பிரியமானவர்களே, Not willing to say sorry, not willing to forgive. Listen Abhishek. சாரி சொல்றதுக்கு சிமோன் ஹம்சன் லிசன், சாரி சொல்றதுக்கு ரெடி இல்ல, மன்னிக்கவும் ரெடி இல்ல. स्तुति आराधना उपचाती है. Please stand up dear friends. नीचे आते. Come on everybody. स्तुति आराधना उपचाती है. आशीष देके नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता अजान. प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता You see, dear friends, देखिए प्यारे मित्र, forgiving दूसरों को माफी करना बहुत मुख्य है. மத்தவங்களை மன்னிக்கிறது ரொம்ப and முக்கியம். ask forgiveness. மத்தவங்க வந்து நம்ம தவறு செய்யறப்போ சாரி கேக்குறது. If wives हम forgives, गलत किया है तो माफी मांगो. భార్య భర్తను క్షమించగలిగితే पत्नी बीबी उनका पति को माफी करना they है. will enter into the family. அப்போ பிசாசானவங்க வர முடியாது. எப்போ கணவரை மனைவி மன்னிக்கிறாங்க. Why the devil is entering into the families? क्यों ये पिशासानवन ஏன் குடும்பத்துக்குள்ள நுழைகிறான்? क्यों शैतान परिवारों में आ रहा है? So much unforgiveness in the heart. மனைவியோட இருதயத்துல அவ்வளோ ஒரு கசப்பு கஷ்டம் கணவன் மேல. So much. बीबी को इतना गुस्सा, So much bitterness. इतना क्रोध दिल में, इतना कोप They are storing in their hearts. அவங்களோட இருதயத்துல அப்படியே வச்சிருக்காங்க. హృదయాల్లో ఎంతో చేతులు ద్వేషాన్ని పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. அப்படியே வருஷ கணக்குல அப்படியே வச்சிருப்பாங்க. सालों से करते हैं. Because of that, அதனால the devil is accessing into your family, into your midst. ஈஸியா நுழைந்துனா குடும்பத்துக்குள்ள शैतान बहुत आसान से घुस जाते हैं घर में. Please ఇంటిలోనికి నీలోనికి సాతాను ప్రవేశించగలుగుతున్నాడు. நமக்குள்ள கோபம் கசப்பு हमें क्रोध गुस्सा होगा तो शैतान आसान से आ जाते हैं. Serious friends. பாருங்க பிரியமானவர்களே. So it takes lot of time to explain all that. இதெல்லாம் நம்ம explain பண்ணனும்னா ரொம்ப We நேரம் need at least 3-4 hours. 3-4 घंटे का हो जाता है. I told you important things. நான் வந்து முக்கியமான காரியம் Humility, దీనత్వం, நான் இதெல்லாம் சொன்னேன். தாழ்மை, दीनता, holiness, పరిశుద్ధత, परिशुद्धம், पवित्रता के बारे में repenting heart, நம்ம வந்து పశ్చాత్తాపడే హృదయం. மனம் திரும்புற ஒரு நல்ல இருதயம், பச்சாத்தாப पड़ने के दिल. Hallelujah. Hallelujah. If you have these things, இந்த காரியத்தை மன்னிக்கிற forgiving. forgiving, repenting, forgiving, everything is done. गुस्सा மன்னிக்கிறது, கோபத்தை எல்லாம் எடுத்து போடுறது. ஓ क्रोध गुस्सा निकल के माफी करना चाहिए. So dear friends, இதனால எப்படி நம்ம பார்த்துட்டு போனால் so Ezekiel இந்த எசேக்கியா ராஜா strengthened
the walls around Jerusalem. యెరూషలేము చుట్టూ ఉన్న గోడలను రిపేర్ చేస్తున్నాడు. அதனால அவர் வந்து இந்த மதில்களை ரிப்பேர் பண்ணாரு, दीवार को रिपेयर किया. To keep the enemy away from this country. ஏன் அப்படி செஞ்சா? அப்படி சத்ருவை தூரமாக வைக்கிறது. சத்ரு नहीं आना है, आएगा तो भी घुसना नहीं. He did not stop there. దానితో ఆగిపోలేదు. அதோட அவர் நிறுத்தல, इससे वो नहीं रुका. What he did? அவர் திருப்பி என்ன செஞ்சார்? இன்னும் என்ன செஞ்சார்? क्या किया? He strengthened, repaired even the fort, the house which the king is living. அந்த ராஜா வாழ்ற அந்த வீடை கூட ரொம்ப பலமாக கட்டினார். वो राजा जहाँ रहते हैं ना, वो इमारत को भी बहुत बल से स्ट्रांग कर दिया. If you go to Mysore हम wealth, मैसूर போனா, हम मैसूर we will see the palace அங்க मैसूर पैलेस இருக்கு. वहाँ मैसूर in पैलेस the middle of the city. पटना वो मध्य नगर के बीच में है. the मैसूर palace पैलेस. is there. Palace is ராஜா there. का वो भवन है. அந்த ராஜாவுடைய பவன் அங்க இருக்கு. And we see big compound wall around that, right? full Correct. பெரிய காம்பவுண்ட் வால் இருக்கு. Yes, Joel. I will see palace. I will see the palace in Mysore. Mysore. देखा है मैसूर पैलेस. वो उसका चारों ओर बड़ा दीवार होता है. So what he did? அவர் என்ன செஞ்சார்? He strengthened, repaired the palace. அந்த पैलेस கூட அவர் பலமாக கட்டினார். वो भवन उनका घर को भी बहुत कहा का रिपेयर है, सबको रिपेयर करके स्ट्रांग कर दिया. To keep the enemy ஏனா away. சத்ரு வரக்கூடாது, உள்ள வீட்டுக்குள்ள வந்துடக்கூடாது, घर में नहीं आना शैतान. See here, dear friend, in Ephesians, देखिए हम एफेसियन को जब एफिसियन राసిన పత్రిక एफेसियों 6th chapter 6వ అధ్యాయం 6-10 में जब हम देखते हैं, and we read from 10th verse onwards. 10वें वाला 10వ వచనం నుంచి we can see, dear friend, यहाँ युद्ध कर रहे हर एक क्रिश्चियन युद्ध में है. और क्रिश्चियन वॉर में था, वो युद्ध करने सोल्जर जैसे ड्रेस पहनते be हैं. strong in the Lord and in the strength of his might. ప్రభువు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన యందు బలవంతులై ఉండమంటున్నాడు. यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तुम स्ट्रांग बन के रहो. நீங்க ரொம்ப பலமாக இருக்கணும் அப்படி கர்த்தருடைய வசனம். Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. మీరు అపవాది తంత్రములు ఎదిరించడానికి శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడి సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనిడి. परमेश्वर के सारे हथियार से बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. देखिए और என்ன சொன்னா, கர்த்தருடைய அந்த சர்வாங்க கவசத்தை நம்ம போட்டுக்கணும். ये देखिए ये आदमी कैसे लगा है ड्रेस, पूरा ऐसे हम भी पहनना है. Hallelujah. Hallelujah. To protect ourselves from the enemy. நம்ம வந்து பிசாசானதுக்கு நம்மளை காத்துக்காக हम शत्रु से शैतान से बचने के लिए What we should do? ये శత్రువు నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి అంటే. हम शत्रु से बचने हैं तो क्या करना How है? the soldier wear the armor. सोल्जर The सैनिक को देखा है, సైనికుడు ఎలాగో కవచం వేసుకుంటాడు. वो हेलमेट डालते हैं, वो वेपन लेते हैं, गन लेके शू डाल के कैसे रहते हैं. क्रिश्चियन को भी एक ड्रेस है. Hallelujah. हालेलुया. See, dear friends, देखिए like the soldier, एक सैनिक जैसे सुनिए अच्छी तरह, every child of God हर एक क्रिश्चियन must wear the armor of God to protect himself from the enemy. बाइबल में परमेश्वर ने ड्रेस देखा है कैसे क्या डालना है. What is that armor? वो ड्रेस क्या है? Armor ఏంటి? ఆ కవచం ఏంటి वो ప్రేమ? ड्रेस क्या है? Yeah. You see, what and all is having? Can you tell me? Anybody? क्या क्या है ये ड्रेस में? What and all is having? Huh? खड्ग है, What? तलवार है, Sword, शील्ड है, shield. और boys at the back. Come on, everybody must see. Everybody has eyes now. Okay. Helmet. हेलमेट पहना है, Huh? Breastplate. Sunday Come on. school children, you know, I taught you everything I taught. Come on, anything else he is wearing. और क्या पहना है? Huh? बेल्ट डाला है. Belt. Then what else is wearing? Hallelujah. शुभम, shoes. Shoes. Anything? कहाँ भी uncovered है. What is there in his hands? हाथ में Holy sword. एक हाथ में कड़ और एक हाथ में शील्ड है.
shield. Hallelujah. हालेलुया। Anything else? और क्या है? हेलमेट है। So tell me how many things you have here. कितना है? Count. లెక్క పెట్టండి ఎన్ని వేస్తున్నారు? 6 sir. Hallelujah. See dear friends, देखिए if you read Ephesians 6th chapter from 1 till from 10, एफिसियन को घर में जाके पढ़ना है। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 6 నుంచి 14 వరకు చదివితే you will find all these things. देखिए घर में सब लोग जाके एफिसियन पे लिखा हुआ पत्र 6 वाला अध्याय 1 से 14 तक पढ़िए। 1 to 14 you read, you get all. No time to explain. आप यहाँ टाइम नहीं है सब पढ़ने के So लिए। every Christian must have that. ये सारे क्रिश्चियन हम सब पहन के चल रहा है क्या? ప్రతి క్రైస్తవుడికి ఉండాలి ये ప్రియులారా. सारे रहना है क्या है? ये क्या है? And fourth important thing which Ezekiel did. Ezekiel చేసిన నాలుగవ విషయం ప్రియులారా. और एक मुख्य कार्य हिजकिय्याह ने किया। Let us go back to 2nd Chronicle 32nd verse सेकंड क्रॉनिकल 2 इतिहास and 5th verse. और 5 What he did, उसने क्या किया? he also made weapons and shields in abundance. ఈటలను డాళ్లను విస్తారముగా చేయించినాడట देखिए ప్రియులారా. यहाँ क्या लिखा है? पहले फिर हिजकिय्याह ने हीहाय बंधकर शरण पाना। ये ना which verse? 5th verse. फिफ्थ वर्स Last में one. लास्ट में क्या लिखा है? वह बहुत से तीर और ढाले भी बनाया और बहुत सारे आयुध बन के रखा। Hallelujah. हालेलुया। How they will fight the war? ஏன்னா யுத்தத்துல போர் வந்தா ஃபைட் பண்ணனும் என்ன தேவை? What weapons they use? हमको युद्ध आएगा। ఏ ఆయుధాలు వాడతారు యుద్ధంలో? फाइटिंग कैसे कर Olden days. पुराने दिन में हाँ? स्वॉर्ड से शील्ड से Sword and shield. Joshua battle. Sword and shield, right? पुराने दिन में What are the weapons? पुराने दिन में किससे फाइटिंग करते थे लोग? खड्ग तलवार लेके शील्ड लेके But- ಹಳೆ ಕಾಲத்துல ಫೈಟಿಂಗ್ ನ the sword shield 2nd Corinthians फिर ನಮ್ಮ सेकंड कोरिंथियंस 10th verse, 10th chapter. 2nd Corinthians 2 10th कोरिंथी chapter. 10 4th Chapter. verse. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Hallelujah. మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయజాలినంత బలము కలవై ఉన్నవి. हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हम दूसरों जैसे सैनिक जैसे युद्ध नहीं करते हैं। हमारा आयुध बहुत बल है। दृढ़ बल शक्तियों को भी हम तोड़ सकते हैं. நம்ம போராடுறது இந்த சரீரிகமான ஆயுதங்கள் கிடையாது. நம்மளுடைய ஆயுதங்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படி பைபிள்ல கர்த்தர் போட்டிருக்கிறார். Hallelujah. हालेलुया। Serious friend. देखिए प्यारे मित्र, Knife. Sword, right? तलवार Every கத்தி, இந்த பெரிய அந்த கத்தியை நம்ம பார்க்கிறோம். every soldier will have எல்லா one சோல்ஜர்ஸ் golden days sword in his ஒரு hands. கத்தி வச்சிருந்தாங்க. ప్రతి ఒక్కడి చేతిలో ఖడ్గం ఉంటుంది. हर सैनिक सैनिक के चलो। हाथ में क्या रखते थे? पुराने दिन में तलवार रहते थे. God's children हमारे पास तलवार रखना है also क्या? should have sword in நம்ம their கையில hands. கூட கத்தி இருக்கணும். हमारा हाथ में भी तलवार होना है. ये మన तलवार क्या చేతిలో है? కూడా ఖడ్గం ఉండాలి. ये तलवार क्या है? இந்த கத்தி என்னது? What sword we should have? இந்த கத்தி என்னது? Come on. Sword of the spirit is what? Sword of the Bible. spirit. What is that? Very good. Huh? Word of. यहाँ देखिए, How many people carry Bible with you today? இந்த இன்னைக்கு நான் சர்ச்சுக்கு போறேன். Please raise நான் up your பைபிள் hands. எடுத்துட்டு வரேன். ఎంతమంది How బైబిల్ many of you have your పట్టుకొచ్చారు? Bibles? Show. Lift up your, show your Bibles. I want to Show see your your Bible. Bible. Bible दिखाओ. कैस कहाँ है? Shubham, where is the Bible? Where is your Bible? Where is it? No? You came late. You didn't bring Bible. All of you, we are not
Where is- pastor where is told the Bible? today, our sword is what? Bible. हमारा तलवार क्या है? It is not Bible. enough to keep this in our hands. सिर्फ हाथ में रखना इस काफी नहीं होगा. Seriousness. கையில வச்சிருந்தால் போதும் இல்ல. The word, போதாது. இந்த வசனம் ये वचन तलवार है, आत्मा का तलवार है, ஆவியோட and sword. I tell you one thing. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்றேன். Jesus fasted 40 days, right? ஏசாமி எவ்வளவு நாள் உபவாசம் இருந்தாரு? 40 దినాలు ఉపవాసం यीशु ఉన్నాడు मसीह కదా? कितना How many know that Jesus fasted 40 कितना days? दिन उपवास थे यीशु मसीह? 40 दिन. अब सब जानते हैं. After that what happened? अब 40 days कழிச்சு என்னாச்சு? Who came to him? अब वो 40 दिन के बाद कौन आया उनके पास? ఎవరు వచ్చారు? यार बंदा Devil came. विश्वास बंदा Right? शैतान आ गया. Enemy. वो ही हमारा एनिमी है. वो How Jesus fought with the devil? अब पिशाचोட எப்படி அவர் ஃபைட் ఎలాగ பண்ணாரு? कैसे కేసయ్య பண்ணாரு? దెయ్యముతో పోరాడాడు? पिशाचोட எப்படி ஃபைட் பண்ணாரு? Come on, with knife, with sword, with the वर्ड ऑफ गॉड. With the word of वचन God. के द्वारा शैतान को हरा दिया, लड़ा शैतान से. वचनத்தை வெச்சுனா పిశాచాలను the వెళ్తా. devil tempted him, right? పిశాచాన్ని కేసయ్య శోధించింది దెయ్యం. इस समय शोधित यीशु मसीह को टेस्ट किया, How Jesus परीक्षा दिया. fought with the devil? पिशाचानोட இயேசுவை எப்படி ஃபைட் With பண்ணாரு? the word. ये शैतान से कैसे लड़ा प्रभु? He said, it is written, it is written, it is written. அவர் சொல்லிட்டே இருந்தார். பிசாசு ஒரு சோதனை கொடுக்கிறார். वचनத்துல இப்படி எழுதி இருக்கு, இப்படி எழுதி இருக்கு. शैतान के एक परीक्षा देते हैं, वचन में ऐसे लिखा है, Hallelujah. ऐसे लिखा बोल के वचन से लड़ने लगा. What happened to the devil? अब पिशाच ने शैतान ने क्या किया? आगे तो ओड़ी विटान. हालेलुया. और वहां से दौड़ के चले गए. Ran away, no? Come on, Joseph. Where? Devil ran away, no? पिशाच ओड़ी विटान. दौड़ गए. आप The जानते devil हैं afraid of पिशाच ने Afraid of? वचन word. వసనన రొంబ భయం. शैतान దెయ్యానికి దేవుని వాక్యం అంటే భయం. शैतान वचन से बहुत It's like a डरते हैं. sword for him. अब कत्ती बोले वो तलवार जैसे वचन बोलना है. When हाथ में नहीं temptation बोलना. comes, जब शोधन वरप परीक्षा आने के समय when pain comes in your दर्द body, आते हैं शरीर में, దేహంలో शरीर నొప్పి में వచ్చినప్పుడు ரொம்ப ஒரு வலி வரும். what we should do? அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? क्या Take करना the है? word. वचनத்தை எடுத்து சொல்லணும். बोलना है वचन को. Hallelujah. Hallelujah. Doctor, when he does a surgery, operation, डॉक्टर ऑपरेशन पண்றப்ப என்ன பண்றாங்க? What do you ऑपरेशन take? करते हैं डॉक्टर. what he will take in his hands? கையில எடுப்பாங்க. ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు డాక్టర్ ఏం తీసుకుంటాడు చేతిలో? సెల్ ఫోన్, రైట్? सेल फोन रख के करेगा. What do you need? सर्जरी பண்ணுவாரா? Huh? साइज सिजर्स नाइफ Very sharp बहुत knives they will शार्प have. है. वो बहुत स्टेराइल हो गए. Oh, sharp ఉంటాయి वो knives. कट करने कुछ ने They are very operation करना है. expensive. वो बहुत महंगा है. Right? ரொம்ப He will costly. use the knife and Knife cut remove பண்ணி, the one who was sick in our அங்கே body உள்ள இருக்கிற அந்த or கட்டியோ spoiled in our जो body. अंदर మన जो దేహంలో ट्यूमर పాడైపోయిన को దాన్ని కట్ చేసి वो తీసేస్తాడు. इन्फेक्ट होने उसको क्या करते हैं? काट के निकल के तोड़ते फेंक देते हैं. Hallelujah. रिसर्च पर हालेलुया. Serious friends, பாருங்க பிரியமானவர்களே, when there is a pain in your body, உன்னுடைய சரீரத்துல வலி இருக்கிறப்போ, when there is a sickness in your body, बीमारी पड़ गए तो நம்ம வியாதி ஆயிட்டோம். what we should do? நம்ம அப்ப என்ன பண்ணணும்? Use the word. வசனத்தை சொல்லணும். இந்த Do surgery there. கத்தி எடுத்து நம்மளே சர்ஜரி பண்ணிக்கணும். हम ही तलवार लेके सर्जरी करना है. Hallelujah. Hallelujah. निकल दर्द, निकल ये इन्फेक्शन. In the infection get out. You அப்படி don't நம்ம do சொல்லணும். that. நம்ம அப்படி சொல்றதே You கிடையாது. run to hospital. நம்ம உடனே ஹாஸ்பிடல் ஓடிடுவோம். हम ஹாஸ்பிடல் This ஓடுறோம். specialist, that specialist, this scan, இந்த that scan. ஸ்பெஷலிஸ்ட், அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட், இந்த ஸ்கேன், அந்த You ஸ்கேன். believe that हम அதுல ரொம்ப and விசுவாசம். empty your account. நம்ம பணத்தை எல்லாம் காலி பண்ணிருக்கோம். ये डॉक्टर, वो स्कैन, ये परीक्षा, सारा पैसा खाली. One young man is in Chennai hospital now. आप एक युवा जवान चेन्नई में हॉस्टल में His intestine fully burned. அவருடைய Intestines intestine अनेक कालिపోయినాయి. बर्न आइछ और वालीबन उनका पेट में है ना जो intestine सब कुछ जल गए. And doctors are doing so many surgeries. डॉक्टर No surgery सर्जरी पड़ी ఇది but पड़ी nothing helping him. ఏది పని చేయట్లేదు. बहुत सारा ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर कुछ भी मदद नहीं. And I asked his mother last week. அவருடைய தாயோட
Do you have money to spend for your child? कहते इतना पास इतना ऑपरेशन का पढ़ने का तुम्हारा पास पैसा है क्या इतना ऑपरेशन What you say? हम என்ன சொன்னாங்க She has 3 acres in Ongole. ஒங்கோல்ல அவங்களுக்கு 3 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்கா அவங்க उनके पास जमीन 3 एकड़ है And she sold all that acres. எல்லாத்தையுமே வித்துட்டாங்களாம் இந்த ஆபரேஷன் का सब कुछ And छोड़ के, spending, pouring pouring money in hospital. அந்த எல்லாத்தையுமே Hospital order बंद तो postpone सोरा कर वो जमीन को सेल कर दिया बेच दिया वो सारा पैसा लेके कहां डाल रहे हैं हॉस्पिटल में அதெல்லாம் हॉस्पिटल போடுறாங்க Serious friends. பாருங்க The word of God has power to heal you. वचनத்தை சொல்லி நம்ம சுகம் படலாம் वचन बोल के हम चंगाई The Bible says in Psalms, God sent His word and healed. దేవుడు తన వాక్యాన్ని పంపించి వారిని బాగు చేస్తున్నాడు అన్న परमेश्वर क्या बोलते हैं उनको वचन को बेच के उनको चंगाई किया वासनத்தை அனுப்பி அவங்களை சுகப்படுத்தினார் அப்படி பைபிள் சொல்கிறது ஹalleluya Simon, not playing with children, please. He sent His word அவருடைய வசனத்தை அனுப்பி and वचन healed. और चंगाई किया और The word has power to heal. वचनத்துல சுகப்படுத்துகிற பலன் உண்டு वचन में चंगाई करने की शक्ति है हालेलुया Hallelujah. And one more thing we need. और இன்னொரு காரியம் Word तलवार in one hand तलवार एक हाथ में and with other hand. இன்னொரு ये और एक हाथ में क्या What we should have? शील्ड Shield to defend ourselves. मतलब शील्ड रखना है जैसे पुराना This दिन word में you need to fight. आरो डालेगा तो With shield you need to defend. देखिए एक हाथ में तलवार होना है और एक हाथ में शील्ड है जो तलवार से लड़ना है शील्ड से सुरक्षा रखने के In लिए let us look to Ephesians only. एफिसियन के लिए We must have the shield of faith. ये शील्ड किसका सिंबल है फेथ विश्वास இந்த शील्ड வந்து விசுவாசத்துக்கு सिंबल Hallelujah. हालेलुया Faith नाम हमारा पास क्या होना है and विश्वास word. वचन में विश्वास होना है वचनத்துல If I विश्वास speak the word, நான் வசனத்தை சொன்னால் believing this sickness will go. நான் विश्वास से சொல்றேன் இந்த வியாதி போயிடும் मैं विश्वास करके वचन को बोल रहा हूं बीमारी चले जाएगा If I speak this word, the enemy will run away. நான் இந்த वचनத்தை सुना पिशाच Believing. ओड़ी विद्वान विश्वास चलनो ये वचन मैं बोलूंगा तो शैतान दौड़ेगा विश्वास से बोलना है दोनों दो हाथ में होना है विश्वास एक हाथ में वचन और एक हाथ में Hallelujah. हालेलुया So many today, நிறைய பேர் बहुत सारे लोग no, they don't value the word at all. वचनத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவமே கொடுக்க वचन को वो ध्यान ही नहीं देते You don't come to church at all. संगति में नहीं आते संडे स्कूल में नहीं आते वचन केक्கிறது संडे स्कूल चर्च வரதே We are mad people having prayer Wednesday, Saturday, Sunday here. நாங்க வந்து Picholo. पास्टर வந்து संडे वेडनेसडे सैटरडे वो पास्टर को काम नहीं है ना इसीलिए बाल संगति You are very wise. संडे में रखते हैं You बुधवार are में very शनिवार में busy रखते हैं। people. आप तो बहुत ज्ञानी है बहुत बिजी लोग Even हैं। Sunday you come at 12:30. संडे में भी लास्ट में And sometimes Sunday also you will not come. थोड़ा समय संडे भी हम नहीं आते हैं चर्च में That shows you have zero value for the word. அது என்ன காட்டுகிறது வசனத்துக்கு நம்ம முக்கியத்துவமே கொடுக்கிறது இல்ல वचन पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं You know the value of the parties, நம்ம पार्टी जब ना हमको पार्टी को Dancing, डांस को बहुत celebration, सेलिब्रेशन बर्थडे movies, watching movies, सिनेमा जाना है शादी में जाना है picnics. पिकनिक जाने We know all that value. ये सबको बहुत मुख्यत्व देते That's why suffering in the family. அதனால தான் குடும்பத்துல கஷ்டங்கள் Poverty, परिवार में बहुत curse, समस्या शाप troubles, लड़ाई बीमारी sickness. Serious friends. देखिए प्यारे मित्र Strengthen your walls. उங்களுடைய மதில்களை பலப்படுத்துங்க तुम्हारा दीवार को रिपेयर करो If you don't repair your walls, तुम रिपेयर नहीं करेगा तो if you keep it as it is, இருக்கிறது போல அப்படியே விட்டுட்டோம்னா ये They जो will- है the बुराई enemy वैसे will ही not चल leave you, रही dear है। friends. शैतान उसके हर प्रकार का नाश कर देते हैं पिशाचान வந்து எல்லா நாசத்தை உண்டாக்கிடுவான் సాతాను నిన్ను విడిచిపెట్టాడు ప్రేమ. शैतान छोड़ेगा नहीं Let तो us humble हम ourselves. दीन बनके Let us repent. हम पछतावा Let us करेंगे। come back to God. हम परमेश्वर के ओर आ जाएंगे दीन தாழ்த்து நம்ம மனம் திருப்பி கர்த்தர் பக்கத்துல நம்ம வந்துருவோம் తగ్గించుకుందాం, పశ్చాత్తాపడదాం, దేవుని దగ్గరికి తిరిగి వద్దాం. परमेश्वर की सन्निधि में हम आ जाएंगे Let us pray. हम प्रेयर करेंगे प्यारे। ప్రార్థన చేసుకుందాం.
Let us, dear friends, let us really humble ourselves in the presence परमेश्वर of के God. सन्निधि में You will हम ask that दीन humility. बनेंगे, हम दीन You बनेंगे, will ask that बच्चे brokenness. हम वो You will ask that fear of God. परमेश्वर का भय దేవుని मानना, భయం పోయింది, हम దీనత్వం उसको పోయింది, పశ్చాత్తాపడే హృదయం हम పోయింది, దీనता को भूल పరిశుద్ధి गए। లాస్ట్ హోలీనెస్ పరిశుద్ధత पवित्रता పోయింది. हमारे पास नहीं है, सॉरी बोलिए। You must repent. You must Sorry, ask God to forgive you, dear friends. परमेश्वर से माफी If you मांगिए। don't repent, तो माफी तो मांगे पश्चात्ताप पड़लेगा तुम्हारा आपसे। दीवार भल बनेगा। you are under terrible attack, dear friends. नहीं तो हमको टेरिबल अटैक होगा प्यारे मित्र। We do not know how that it will happen. విశ్వాసం అటాక్ பண்ணுவோம் ఎప్పుడు ఎనిమి నిన్ను శత్రువు అటాక్ చేస్తాడో నాకు తెలియదు ప్రియులారా. స్ట్రాంగ్ பண்ணுவோம் ప్రియమానవர்களே హల్లెలూయా Oh, Father. Lord Jesus, forgive us, Lord. help us to give the importance to the word Forgive us, Lord. oh परमेश्वर हमको माफी कीजिए Forgive us. Oh, Jesus. माफी Pray, dear friend. Don't talk. Close your eyes and pray. Don't waste your time here. You are not coming here to just time pass, dear friend. Don't come here just to waste your time here. वेस्ट करने के लिए नहीं आना Come here for the blessing. आशीर्वाद Come here for the correction. करेक्शन के लिए Come here for rebukes. आया पर सही बनने के लिए आइए Come here for change in your life, in your family. Don't waste your time. Don't waste your others' time. नहीं करना दूसरों का टाइम नहीं वेस्ट Close your eyes, dear friends. आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए దయచేసి కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేయండి ప్రియులారా. Don't look this side and that side, dear friends. Don't speak to God, dear friends. Say sorry to Jesus, dear सॉरी friends. बोलिए जीसस को यहाँ वहाँ मत देखना बच्चे लोग सब लोग आंखें बंद करके प्रेयर करना है सब लोग जीसस के पास माफी मांगे Sorry. तुम्हारा बुराई को निकल Sorry. दीजिए मेक योर वॉल्स स्ट्रांग तुम्हारा दीवार को बल से कर दीजिए तलवार को We are लेके so शील blind में- that even we are not able to realize that our walls are broken. प्रभु हम इतना अंधबंध हैं कि हम नहीं ग्रहण कर पाए कि हमारा दीवारों तोड़े हैं అయ్యో మా గోడలు పడిపోయినాయని గ్రహింపబడలేనంత గుడ్డితనంలో మేము ఉన్నాం हमारा ప్రభు. दीवारों तोड़े हैं ये ग्रहण भी हमारा पास नहीं है प्रभु Forgive us, हमको Lord. माफी कीजिए परमेश्वर We lost that humility. We lost that brokenness. प्रभु We lost the fear of God. We lost that holiness. वो पवित्रता वो परमेश्वर का भय मानना दीनता हमारे पास नहीं है हार्ड है परिस्थिति हम इळंदुटो गतावे मैं माननी हूं Sorry. Not able to forgive. அத்தாவல மன்னிக்க Not able to ask forgiveness. மன்னிப்பு கேட்க முடியாத ஒரு நிலைமை Sorry. சாரி Our lives are in great danger today. நம்ம அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டா நம்மளுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப டேஞ்சர் Our families are in great danger today. हमारा परिवार Our children are in great danger today. पड़ेगा तो बुराई नहीं छोड़ेगा तो बहुत खतरा में है प्यारे लोग Sorry, Lord. Sorry, Lord. Where is the protection for us if you leave us? सुरक्षित हो गए तुझको हम छोड़ेगा तो कहाँ सुरक्षित होता है Where can we find security for our lives? हमारा जीवन के लिए सुरक्षित Money can't give us security, पैसा Lord. हमको सिक्योरिटी नहीं दे सकते డబ్బు మాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేదు ప్రభు. पैसा हमको सिक्योरिटी नहीं दे The सकते devil is cheating us, शैतान कैसे saying if you have more money, your life will be more और secure. पैसा होगा तो बहुत सिक्योर होगा నీకు డబ్బు బాగా ఎక్కువ ఉంటే నీ లైఫ్ కూడా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుందని సాతాడు మోసం చేస్తున్నాడు మమ్మల్ని ప్రభు. మమ్మల్ని క్షమించండి. क्षमा कीजिए Forgive us, Lord हमको Jesus. क्षमा कीजिए परमेश्वर Cleanse us, wash us with your blood. तेरे पवित्र लहू से हमको सुरक्षित Help us like Ezekiel ऐसे क्या जैसे हमको मदद to cut off the water, the evil flowing out of our वो lives. बुराई जो हमारा जीवन से बाहर है उसको रुकने के Help लिए us to stop it, oh Father. நம்மளுடைய எங்களுடைய இதயத்தை பிரவாகிக்காத தீமையை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் మాలో నుంచి ప్రవహిస్తున్న మురికిని మేము ఆపు చేసి వేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Let us not allow the devil to access into our life through this evil. हम पर एक्सेस नहीं होना ఈ చెడు ద్వారా సాతానుడు మాలోనికి ప్రవేశించకుండా మేము వాడికి ద్వారములు మూసివేయడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. Jesus. Help us to strengthen our walls. Help us to strengthen our inner walls. తండ్రి మా బయట గోడలను లోపల గోడలను మేము బలపరుచుకోవడానికి రిపేర్ చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Help us to have always the sword of the Spirit, word of God in our hands.
ఇదిగో ఆత్మ ఖడ్గమైన దేవుని వాక్యమును ఎల్లప్పుడూ మా యొక్క కుడి చేతిలో మేము కలిగి ఉండడానికి, మా హృదయాల్లో కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయి. Help us always to have the Lord even shield of faith in our hand. తండ్రి ఇదిగో విశ్వాసం అనే డాలను మేము ఎల్లప్పుడూ పట్టుకొని ఉండడానికి సహాయం చేయి. Lord Jesus, bless your word to our hearts. In Jesus' holy name we pray. Amen.